Good afternoon, ladies and gentlemen, from Apollo Hospitals Enterprise Limited. I welcome one and all to this prestigious press meet where we all have gathered to mark and celebrate a milestone achievement of crossing 11,000 genomic consultations across the nation. May I please request our dignitaries to come on the stage. Namaste and a very good morning to everyone. On behalf of our organization Apollo Hospitals, it gives me great pride to stand before you today at this landmark occasion as we celebrate an extraordinary milestone in our journey of advancing precision healthcare with the completion of 11,000 genetic consultations at the Apollo Genomics Institute. This achievement is not just about numbers. It reflects the vision of our chairman, the leadership at Apollo Hospitals of making genomics accessible, relevant and transformative for patients and families across India. From our first center of genomic medicine in Delhi in 2021 to a growing network of institutes in Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Ahmedabad and most recently at Bangalore, Apollo has built the country's largest footprint in clinical genomics. At the heart of this journey is our unwavering belief that every patient deserves personalized care informed by science, innovation and compassion. Genomics is redefining the way we diagnose, prevent and treat disease, and Apollo Hospitals is proud to be leading this transformation for India and beyond. It's my privilege to welcome our esteemed panel. We have Ms. Soha Ali Khan, who's very graciously is a part of this cause. Dr. Anupam Sibal, our Group Director for Medical Service at the group. We have our clinicians, Dr. Dhavendra Kumar and Dr. Kshitija Parel, and I'd like to welcome all of you from the media and our friends and colleagues over here. We would take time out and hear the esteemed panel on our way forward, and I thank you all for being a part of this. Thank you. Good afternoon, our special guest Sohaji, Arunesh, Ravi, Kiran, Dr. Kshitija, Professor Dhavendra Kumar, who is joining us from England, our friends from the media. Very good afternoon to all of you. What I'm going to be doing is really look at how genomics is going to progress in the next few years. So all of us are very familiar with Nostradamus and his prophecies. He predicted the Great Fire in England, in London, the rise of Napoleon, the rise of Hitler, the Second World War, assassination of Mr. Kennedy, 9/11, the nuclear disaster in Chernobyl. But what about his predictions as we speak? Let's look at 2025. With a lone brain seized by his disciples invited to be immortal eyes to the south. Now, is he alluding to AI and all the variations of AI that we are now becoming familiar with? Is he referring to robotics? Is he referring to ML? So just like we have Nostradamus, we also have predictions in genomics, and these predictions came from Dr. Francis Collins, and he gave predictions for 2010, for 2020, for 2030 and for 2040. The same is happening with genomics, and we are now moving into the social genome era. What is happening is that the cost is coming down, and because the cost is coming down, accessibility is increasing. $3 million was spent on the initial project for the human genome, and now the whole genome sequencing as of this year costs 60,000 rupees, and the exome sequencing, where you look at targeted genes, that costs about 18,000, and we get this result in about 2.5 weeks. But going forward, we believe that the cost of this will come down to less than 10,000 rupees. This 2.5 weeks will become a few days. We will start using these tests more and more, and they will become integrated into clinical practice, which has started to happen. And perhaps a time will come where we will sequence every newborn to be able to predict how are we going to manage them.
Gene therapy, there's a lot of interest. There are more than 20 diseases where we're looking at gene therapy, and there are different ways that it's being studied. The first patient in the world was treated with this CRISPR gene editing therapy for a very rare condition where the baby was not able to handle urea which is produced in the body, and this child would have required a liver transplant, but because of this therapy did not need a liver transplant. Yes, sir. Let's take a look at Apollo Hospitals and develop analysis of Genomic Institutes. So, I'm going to talk about two directions that development in field of medicine and personalized. So I'm here today to update you regarding Apollo Genomics Institute Navi Mumbai's journey so far. So the inauguration of this institute was done by Honorable Vice Chairperson of Apollo Hospitals, Dr. Preetha Reddy, on 11th of January 2023. Her vision established the institute as a center for excellence dedicated to providing comprehensive cutting-edge genetic diagnostics and counseling. The initiative marked a significant step forward in integrating genomics into routine clinical care across Apollo's network and beyond. Even before the official inauguration, our team of clinical geneticists and genetic counselors has been providing expert evaluation for a wide spectrum of genetic conditions. The genetics team includes clinical geneticists, me, Dr. Kshitija Patil, Dr. Snehal Malakmir, Dr. Parag Kamankar, Dr. Anil Jalan, and our genetic counselor, Ms. Shilpa Kamble. Overall, we have seen numerous cases till now, and this wide spectrum of cases diagnosed and managed in our genetic OPD include congenital anomalies and dysmorphology, inherited metabolic disorders, prenatal and reproductive genetics cases, hereditary cancer syndromes, neurodevelopmental disorders, and even cardiac and neuromuscular genetics cases. Some ultra-rare cases which have first been reported by Apollo Genomics in India are one of the cases this, where a 14-year-old boy has presented with an old-looking appearance, skeletal abnormalities, and short stature. A detailed clinical evaluation and genetic testing led to the diagnosis of mandibuloacral dysplasia with type B lipodystrophy. This is a very rare disorder which is where a specific targeted orphan drug therapy is available in form of lonafarnib, and this patient got access to the drug by collaborating with Progeria Research Foundation and has shown significant clinical improvement. Soha on the stage. Good morning, everyone. It really is a privilege to be here today and to see such wonderful advancements being made in medicine, which make me feel very hopeful for the future. I was actually wondering what I'm going to talk about and what my connection could possibly be with genomics, pertaining especially to reading, understanding, and using our DNA. And then I realized actually I can say a few things, even as an artist. So as an actor, a writer, and as a student of history also, because I studied history for my college degree, I have really always loved stories, whether they're told in the form of books, whether they're told in the form of films, or whether you just have conversations with people and you know, as families we tell each other stories at the dinner table all the time. I've always enjoyed that. And I've realized that one of the most powerful stories that we actually carry is within us. It's in our very cells. And it's the story, of course, of our DNA, our genome, and how it shapes who we are. And genome mapping is, of course, the history of our own bodies. So our genome, I've been told, is like a library of instructions, 3 billion letters long, and it decides everything, everything from the color of our eyes to how our bodies would respond to certain medications. But we've, of course, known this for some time. We're talking about it today, I think, because DNA testing today and genomics isn't just abstract science anymore. It's actually touching our lives in very real and wonderful ways. We often think the disease is something that is external, something that strikes randomly. But more often, we realize that the seeds actually lie in our genes and often something that is passed down. Science today offers tools to understand all the vulnerabilities that we might potentially inherit.
It gives us a chance to intervene, to prevent. And what we're talking about today is also the wonderful aspect is to personalize care, so that loss doesn't have to keep being repeated. We all know doctors. Whenever we go to a doctor, they'll say, does anyone in your family have diabetes? Does anyone in your family have heart disease or cancer? So these are things that can be passed down. And genomics takes that same question, but it gives it a scientific precision. So we are coming to the end of this function, and it is my proud privilege to deliver the vote of thanks. First and foremost, I extend our deepest gratitude to our beloved chairman, Dr. Preetha Reddy, for ever guiding us and being our guiding force against every endeavor which we undertake. Sincere thanks to Dr. Anupam Sibal, Group Medical Director, Senior Consultant, Pediatric Gastroenterology and renowned hepatologist, Apollo Hospitals, for conceptualizing, leading and guiding the genomics program across Apollo Hospitals. And very special thanks to Ms. Soha Ali Khan for gracing this platform and lending her voice to such a meaningful cause. Thank you, Professor Dhavendra, our Senior Consultant and Advisor, Apollo Genomics Institute, for sharing his valuable feedbacks on future of genomics. We are grateful to Dr. Sijida Patil for leading the Mumbai unit, Mumbai Genomic program, and sharing the progress what we have डिजीज़ को made. देखेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके नंबर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कुछ सालों पहले तक अवेलेबल नहीं थी, इस एरिया में इतना काम नहीं हुआ है। बट अब जैसे हम लोगों ने 2 साल पहले ये शुरू किया, सेंटर्स बना रहे हैं और इस पे रिसर्च बढ़ रही है, तो अगले 4-5 सालों में क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अब वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट कम है, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने आएगा। और आपने बोला जैसे कि बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तो हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई करें कुछ एरियाज़ में कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। सो इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट है और अगले कुछ सालों में काफ़ी नॉलेज जो है हमारी बढ़ेगी और उस डेटा को हम यूज़ कर पाएंगे प्रैक्टिकल टर्म्स पे इन डे टू डे मेडिसिन। जेनेटिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, उसका जेंडर से रिलेशनशिप है कुछ चीज़ों के अंदर, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जेंडर का कनेक्शन नहीं भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दवाई है, जैसे मैंने बताया 250 दवाइयाँ हैं जिसके अंदर जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मेल या फीमेल में फ़र्क पड़ता है उस दवाई को मेटाबोलाइज करने में। अगर आपके पास जीन है तो आप अलग तरीके से मेटाबोलाइज करेंगे, और नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। बट कुछ कैंसर्स जैसे हैं फॉर एग्जांपल, वो ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक हैं, तो ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो वो बड़ा स्पेसिफिक है वो कैंसर जो है, और उसका जेनेटिक कनेक्शन जेंडर के साथ। मिनिमम इसका आंकड़ा क्या रहेगा अगर सर्वे करेंगे कि जेंट्स में ज़्यादा है कि लेडीज़ में, इसका मिनिमम? वो आई थिंक वो कोई आंसर नहीं दे सकता उसका, क्योंकि लगभग 13,000 से ज़्यादा बीमारियां हैं, तो उसको ऐड करके जेनेटिक्स के साथ, जेंडर के साथ, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन रियली आंसर दैट। पहले दिन से कोशिश यही रही है कि जो कुछ दुनिया में कहीं होता है वो हम यहाँ करें, ताकि हमारे देशवासियों को बाहर ना जाना पड़े। आपको मालूम है एक समय था जब हिंदुस्तान से बाहर जाते थे लोग, अब 150 मुल्कों से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ किया, चाहे वो पहला पेट सीटी स्कैन रहा हो, चाहे वो पहला साइबर नाइफ रहा हो कैंसर के लिए, या वो पहला प्रोटॉन थेरेपी यूनिट रहा हो जो हमने चेन्नई में बनाया था, जो कि पहला था साउथ एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं था, चाहे वो पहला जैपेक्स हो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, या पहला लिवर ट्रांसप्लांट हो जो हम लोगों ने किया था इंडिया में 1998 में, और वो बच्चा खुद डॉक्टर है,
इस महीने का था तब। तो हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हम हर समय दुनिया में जो भी कुछ बेस्ट है टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज उसको लाएं। पिछले हफ्ते हमने एशिया का पहला विमेन डेडिकेटेड कैंसर सेंटर दिल्ली में खोला। तो जिनोमिक्स फिट इन होता है बहुत सारी इन चीज़ों के साथ, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, विमेन डिजीज़ हो, बच्चे हो, न्यूरोलॉजिकल हो। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिनोमिक्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ ताकि उसका बेनिफिट जो हो जिन व्यक्तियों को हो सकता है उन तक पहुँचे, जो कि अभी तक सीमित है। डॉक्टर रविशंकर। डॉक्टर साहब, अच्छा पहली चीज़ मुझे एक चीज़ जाननी थी। आजकल जो बीमारियाँ हैं इसमें दो चीज़ बहुत कॉमन है जो पहले नहीं हुआ करते थे, एक है कैंसर और दूसरा हार्ट डिजीज़। ये अचानक इतना तेज़ी से बढ़ क्यों गया और इसका क्या प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं इसके लिए कि हमको आगे किसी को मालूम पड़े, होने के बाद मालूम पड़ता है, इसके लिए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? ये तो जो हार्ट डिजीज़ है, एक तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और हमारे जो लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रहा है, लोग बिजी होते जा रहे हैं, लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जो सीडेंट्री हैबिट कहते हैं, एक्सरसाइज, चलना फिरना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ कुछ जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, वो भी सबसे कैंसर के भी कई कारण हैं। एनवायरमेंटल भी है, उसमें कैंसर के कई रीजन्स, जेनेटिक भी कैंसर के रीजन्स हैं, और उसका भी रिलेशन लाइफस्टाइल से जुड़ा है। सिगरेट पीने से, लिकर का, जो शराब का सेवन करने से, और वो लाइफस्टाइल, मोटापा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन दोनों को। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये दोनों एक ही तरह से जो बढ़ रहे हैं, उन सबका ये मिला जुला सबका असर है। अच्छा, ये किस स्टेज पर किसी को भी हो सकता है ये दोनों बीमारी? सो इसके लिए कोई एज नहीं और कोई वो नहीं है। पहले ये बात थी कि हाँ थोड़ी ज़्यादा एज में हार्ट अटैक होता था, बट अभी आप देखेंगे यंग लोग भी, 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो मोटा दिख रहा है वो उसी को हार्ट अटैक हो, दुबले पतले फिट लोगों को भी हार्ट अटैक होगा, बिकॉज उनकी ईटिंग हैबिट्स अगर गलत है, उनका अगर जो लाइफस्टाइल गलत है, सिगरेट का सेवन, दारू का सेवन, और उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो फिट दिखने वाले लोगों को भी यंग एज में भी। अच्छा, मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा है कि हम ये चेक कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़े कि ये बीमारी है या नहीं है, प्रिकॉशन के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर इन दो बीमारी के बारे में जो मैंने पूछा आपसे, कैंसर और हार्ट डिजीज़ के बारे में। कैंसर का भी जो पीरियोडिक टेस्ट है वही सबसे अच्छा उसका जो प्रिवेंशन और इलाज का तरीका है, क्योंकि कैंसर से आपको पूरी तरह से, तकरीबन ज़्यादातर कैंसर से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। उसका मेन एक चीज़ है कि जितनी जल्दी डिटेक्शन हो उसका इनिशियल स्टेज में, वही उसका इलाज सक्सेसफुल होने का जो मंत्र है वही है। अगर डिले लेट स्टेज में होता है कैंसर, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा घातक होता रहता है। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, टेस्ट हैं हर तरह के कैंसर के लिए, अलग अलग टेस्ट हैं, कहीं पे ब्लड टेस्ट है, कहीं पे अल्ट्रासाउंड है, इमेजिंग है, तो कई तरह के टेस्ट हैं जिससे आपको कैंसर शुरू के स्टेज में ही पता लग सकता है। सेम चीज़ आपका हार्ट की बीमारी के लिए भी, आप ECG, TMT, आपका जो CT से करते हैं, CT एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं उसको, उसके थ्रू, और आप पहले से टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपके किस स्टेज में हार्ट की बीमारी को कोई चांसेस है कि, और उसका प्रिवेंटिव इलाज करा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको साल में एक बार ज़रूर आके और अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कराना चाहिए। आप ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल ही शुरू में आप अर्ली स्टेज में पता कर सकते हो और उनका समाधान निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। The idea of establishing the Apollo Genomics Institute was to make sure that access to expertise in clinical genomics through clinical geneticist and counselor becomes easily available, as we know that there is a increasing recognition of the importance that genomics plays in clinical medicine in several specialties, for making a precise diagnosis, for prognosticating and predicting what will happen in the future,
that with the expansion of the network of the Apollo Genomics Institute, this service will become more and more easily available to citizens across the country. आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए 11,000 Genomic Consultations का जो एक लैंडमार्क हमने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब हम लोगों के 12 सेंटर्स हैं अपोलो जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट देश भर में, और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि नॉलेज जो जेनोमिक्स की यूटिलिटी है कि मेडिसिन में कैसे हेल्प कर सकता है, ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, कैंसर में मेडिकेशन कौन सी देनी चाहिए इंडिविजुअल्स को, उनके जेनेटिक मेकअप के बारे में वो ध्यान रखते हुए, ऑब्स्टेट्रिक्स में, बच्चों के प्रॉब्लम्स में, कार्डियक में, न्यूरो में नॉलेज बहुत बड़ी है। और हमारे जो 3 एक्सपर्ट्स हैं क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट और काउंसलर्स, वो इस नॉलेज को पेशेंट्स तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट है उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पर्सनलाइज करके हम आगे उनके सामने उसका बेनिफिट लेके जाएं। और हमारा ये प्रयत्न है कि अगले कुछ सालों में हम अपनी जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट को और एक्सपैंड करेंगे। 5 और सेंटर हम खोलना चाहते हैं ताकि जो रीच है जेनोमिक्स की वो इंडिविजुअल्स तक आसानी से पहुँचे। Are usually considered to be very rare, but if you look at it cumulatively, they are quite common when we look at our large population. So, and many times the challenge is in identifying that the disorder is actually genetic. So, patients will have gone to multiple doctors and still not had a diagnosis. These disorders are usually difficult to diagnose. They require a multidisciplinary management. So, in our centers, we have usually multi-speciality hospitals where we have all kinds of specialties available and we can manage these patients in a multidisciplinary way. Few pointers to genetic disorders are something which where multiple patients, people in the family are suffering from the same disorder, or there is multi-system involvement like heart, kidney, eyes, multiple systems are involved. Or sometimes some disorder which is presenting at a much early age than expected, like say Parkinsonism occurring very early in the 20s or 30s, or something which is not getting treated by the usual method, like say pneumonia, which is treated keeps recurring. So these are some pointers for genetic disorders. So there should be vigilance for this. We should not ignore there are implications for diagnosis because we can monitor these patients, we can put them on surveillance, we can improve their quality of life. In fact, many genetic disorders are now having targeted definitive therapies as well, and we can help the patients in accessing these therapies with collaboration, even global collaborations as we discussed in the press meet. So यही मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अनुवंशिक बीमारियां जो कहते हैं, कई बार इसको हम समझते हैं कि बहुत ही रेयर चीज़ है, लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें, सारे पॉपुलेशन में इंडिया के देखें तो ये बीमारियां काफ़ी सारी पेशेंट्स में है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं। कई बार पेशेंट की डायग्नोसिस होने में ही कई साल लग जाते हैं। तो जैसे कोई बीमारियां हैं जो परिवार में कई जनों को हो रही है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बहुत सारे शरीर के पार्ट्स में है, जैसे कि मान लो किडनी का भी अफेक्शन है, दिल का भी है, आँखों में है और कहीं है, तो फिर वो शायद जेनेटिक हो सकता है। या फिर कोई बीमारी जो नॉर्मल साधारण ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है या रिपीटेडली हो रही है, वो भी जेनेटिक हो सकती है। या फिर कोई चीज़ जो उम्र से काफ़ी जल्दी प्रेजेंट कर रही है, जो नॉर्मली बुढ़ापे में लेट एज में होती है जल्दी प्रेजेंट, ये सारी जेनेटिक चीज़ें हो सकती है। और इसको डायग्नोस करने का एडवांटेज ये है कि इसके आजकल कई सारी जेनेटिक बीमारियों के डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी आए हुए हैं। और कई बार ये ड्रग्स काफ़ी मुश्किल होते हैं एक्वायर करने के लिए, लेकिन हमारी टीम इसके लिए इक्विप्ड है कि हम अच्छे से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ हासिल करवा के दे सकते हैं पेशेंट्स को। और हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये सारी बीमारियाँ कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट से होती है। हमें स्पेसिफिक कार्डियोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, ऑर्थोपेडिशियन से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो